देखिए 1 घंटा 8 मिनट बाद आने वाला है अपना क्लाइंब बोर्डिंग जस्ट पहले मेंटेनेंस ब्रेक My students ask me, Vanessa, can I learn to speak English without living in the US or another English-speaking country? And the answer is yes. Thanks so much for watching. I'll see you, just kidding. Today I'm going to give you 5 ways that my students have creatively learned to speak English naturally without moving to another country while they're still living in their home country. If you want to improve your English speaking skills, which is probably why you're here at Speak English with Vanessa, well, you need to speak, right? The main thing that you need to do to improve your speaking is to speak. But you don't need to go to a classroom to speak. You don't need to pay a private tutor to speak. In fact, you can speak mostly for free in your home country. Today, let's talk about 5 mostly free ways to start speaking English now. My first tip for learning to speak English alone without moving to another country is summarizing. This is the only tip that doesn't involve leaving your house, so I hope that it will be useful to you immediately. This tip is to take an article, any article, and try to summarize it in your own words. Let's take a look at this in action. Here you can see I'm on the popular news website npr.com. Well, let's click on this article about the World Cup. The World Cup 2018, what's happened so far? When we see the main article, you can see that there are a lot of great expressions, a lot of great words that they've used, so we can go sentence by sentence. The first week of the World Cup is arguably the best. Great, we can summarize this and say, the author thinks that the first week of the World Cup is the best, in his opinion. Excellent. This way you have summarized, you've used your own words, but you're also speaking out loud spontaneously. Excellent. This is a great way to summarize.
You can also do this with spoken questions. I made a video on my channel previously about learning English with stories, so we're going to take a look at that clip right now. You're going to hear me reading a short part of a story and then asking a question. All of the words that you can use to respond are in that paragraph, are in that section that you just heard. So you need to listen accurately, but you just need to summarize and restate, answer the question in your own words. This is a great way to practice speaking at home, but let's practice it right now. Let's listen. Sam felt relieved that someone else was aware of the hectic situation outside the airport. Sam told the driver the name of his hostel, which was supposed to be just 15 minutes away from the airport. Question number 5. Where did Sam want to go and how far away was it? How far away was it? Where did he want to go and how far away was it? So we need 2 pieces of information here. You can make a sentence with these in any way you'd like. Sam wanted to go to his hostel. That was only 15 minutes away. So we could say this in a couple different ways. You could say, Sam wanted to go to his hostel. And then we could make a new sentence here. It was only 15 minutes away. Great, we've got a lot of choices, but here I chose to combine these with the word that. And that's just going to give you another kind of sentence structure that you can integrate into your English learning. You can take a look at this full lesson up here or in the description, or check it out at the end of this lesson. Make sure that you are speaking today. Start this right now. My next tip for learning to speak English without moving to another country is to use websites like meetup.com. I can almost guarantee that no matter where you live across the world, there will be a meetup in your city or near your city, and there's a high chance that there might be an English-speaking meetup as well. Let's take a look at the website really quick to see what options are available. Alright, let's go to meetup.com, and we can imagine that you don't already have an account, so we'll go down to language and culture and type in a big city. How about in Brazil, Sao Paulo? Great. Well, here we have, whoa, 9,000 people, English speakers. This is excellent. And click join this group. There's no excuse. Go and do it. Of course, the more you speak, the better, but I know that a lot of you are busy. I'm busy. Everyone's busy, right? So try to do this at least once a month. Use my other speaking tips during the week, all of the other times that you're not going to physically speak with someone. But if you speak with someone once a month, it really increases your motivation, and it shows you that real-world application of speaking English, being understood, understanding other people. It's so helpful. My third tip for improving your English is actually one where you don't need to leave your house that much, and it is host an exchange student for a week, a couple days, a month, as long as you want, or maybe even host them for dinner. I've had a couple students recently send me emails and say, I'm so excited because next week a British exchange student is coming over to my house for dinner and we're going to be able to talk together. In fact, I have 3 examples of this that are pretty relevant. One of them was one of my Japanese students who invited a 16-year-old American student over to his house for a couple days so that his 16-year-old Japanese daughter could spend some time with her. But he also was in the house, he was taking them places, he was surrounded by their English conversations in his home in daily life. One of my other students from the Philippines hosted a British exchange student for a couple weeks during her summer vacation so that she could have some free time and connect with the student, but also show her places and just enjoy this real conversation. My final example is from my personal experience. A few years ago, I went over to dinner at my friend's house, and when I went there, there were 15 people from 15 different countries. She had invited
tons of people from the local community who didn't have somewhere to eat dinner, no family to eat dinner with because they were just visiting or they were studying at the local university or they just wanted other people to connect with. So she invited these people over to her house for dinner, and you know what? The common language was English. Everyone was sharing these conversations and this dinner in English. Of course, you don't need to have someone actually stay in your home. Call the local university, and usually they're more than willing to help their students connect with a local family so that the student feels more integrated and more comfortable. You can host them for dinner once a week, or dinner once a month. You can even just be a contact if they need a local family to talk with. So go and talk to your local university, type into Google the local student exchange program, try to connect with other people because being proactive, that means doing things, not just sitting and passively watching, but going and being proactive is what's going to help you learn to improve your English without spending thousands of dollars to move to the US. My fourth tip is to get involved in your community, specifically places where there might be tourists. So, for example, maybe there is a festival or event coming up and they need someone to volunteer to work in the information desk. I know for me, when I visited other countries and I needed help finding my way places or getting a restaurant recommendation, and I went to the information desk, it was so helpful if someone could explain even a little bit in English. I felt so comforted and I felt like I could really understand what they were saying. So if you would like to volunteer at a festival, volunteer at an event, or maybe there's even an English pub or an Irish bar or an American restaurant, there are probably some English speakers who work there or who go there. So feel free to enjoy your community, but you can try to be proactive and find those little bits of English in your community and take advantage of it. My fifth tip is to speak with someone else online. But this one is tricky, and I want to make sure that you do it correctly. Do not, never write your Skype ID, your WhatsApp phone number, your email address in the YouTube comments. There are plenty of just bots and different things that are going around trying to take your information, and you're going to get spam calls and spam emails, and it's not a good way to share your information, but also it's not a good way to connect with someone. So this is what I recommend doing. Use the YouTube comments correctly. Let's imagine that you just watched a video about how to use should have. You can watch that here. Well, let's say that someone else wrote a comment and said, I should have started learning English with Vanessa earlier. It's a beautiful sentence, but you also feel like you connect with that sentence. You have had the same experience. You think, you know what, I should have started studying English with Vanessa earlier too. So you can comment on their comment and say, oh, when did you start learning English with Vanessa? I agree, I should have started earlier. Start a relationship. Start to connect with them. Don't immediately say, hi, let's speak on Skype. Because you know what? It takes a lot of courage to speak with anyone in a second language in English, but to speak with a total stranger who just threw their contact information at you on the internet, it's a pretty low possibility that that's actually going to work out. Even if they're a nice person, it's going to be not as comfortable to connect. So I recommend just commenting together, start to get to know each other, and maybe after 4 or 5 or 6 comments back and forth, then you can start to say, hey, do you have Facebook? Let's connect. Here's my name on Facebook. Let's connect. Great. Or you can send them a private message and try to connect. Also, of course, if they are a beautiful girl or a handsome man, don't be creepy. You know what that is. Just be polite. A lot of my students in the course, the Fearless Fluency Club, speak together on a daily basis in Facebook Messenger, on Skype, and Google Hangouts. And it's a really great way to connect with each other and learn every day. Learn about different cultures and also use English. You can join up here if you'd like for $5 for the first month with the coupon code NEW. You can connect with tons of really passionate English learners. These are just a few
of my top tips for speaking English, learning to speak English without going to a classroom, without paying a tutor, without moving to the US. So I hope that you can at least take one of these and be proactive. Take action today, because you know what? Even if you moved to the US, even if you lived in the middle of New York City, you would still need to be proactive. I have students who have lived in the US for a long time, and they're still struggling to learn English because they don't get out and meet other people. So even if you were living in the US, it's not a guarantee that you would become fluent. You need to be proactive no matter where you live. You clicked on this video because you want to improve your English speaking skills, so be kind to yourself and do it. Now I have a question for you. In the comments below this video, let me know, do you have any other creative ways to learn English, specifically to speak English naturally without leaving your home country? Let me know in the comments and let's share some ideas together. Thanks so much for learning English with me, and I'll see you again next Friday for a new lesson here on my YouTube channel. Bye! The next step is to download my free ebook, 5 Steps to Becoming a Confident English Speaker. You'll learn what you need to do to speak confidently and fluently. Don't forget to subscribe to my YouTube channel for more free lessons. Thanks so much. Bye. Well, a habit is a redundant set of automatic, unconscious thoughts, behaviors, and emotions that's acquired through repetition. A habit is when you've done something so many times that your body now knows how to do it better than your mind. So if you think about it, people wake up in the morning, they begin to think about their problems. Those problems are circuits of memories in the brain. Each one of those memories are connected to people and things at certain times and places. And if the brain is a record of the past, the moment they start their day, they're already thinking in the past. Each one of those memories has an emotion. Emotions are the end product of past experiences. So the moment they recall those memories of their problems, they all of a sudden feel unhappy, they feel sad, they feel pain. Now, how you think and how you feel creates your state of being. So the person's entire state of being when they start the day is in the past. So what does that mean? The familiar past will sooner or later be predictable future. So if you believe that your thoughts have something to do with your destiny, and you can't think greater than how you feel, or feelings have become the means of thinking, by very definition of emotions, you're thinking in the past. And for the most part, you're going to keep creating the same life. So then people grab their cell phone, they check their WhatsApp, they check their text, they check their emails, they check Facebook, they take a picture of their feet, they post it on Facebook, they tweet something, they do Instagram, they check the news, and now they feel really connected to everything that's known in their life. And then they go through a series of routine behaviors. They get out of bed on the same side, they go to the toilet, they get a cup of coffee, they take a shower, they get dressed, they drive to work the same way, they do the same things, they see the same people, they push the same emotional buttons, and that becomes the routine, and it becomes like a program. So now they've lost their free will to a program, and there's no unseen hand doing it to them. So when it comes time to change, the redundancy of that cycle becomes a subconscious program. So now 95% of who we are by the time we're 35 years old is a memorized set of behaviors, emotional reactions, unconscious habits, hardwired attitudes, beliefs, and perceptions that function like a computer program. So then a person can say with their 5% of their conscious mind, I want to be healthy, I want to be happy, I want to be free. But the body's on a whole different program. So then how do you begin to make those changes? Well, you have to get beyond the analytical mind, because what separates the conscious mind from the subconscious mind is the analytical mind. And that's where meditation comes in, because you can teach people through practice how to change their brainwaves, slow them down. And when they do that properly, they do enter the operating system where they can begin to make some really important changes. So most people then wait for crisis or trauma or disease or diagnosis, and they wait for loss, some tragedy to make up their mind to change. And my message is, why wait? And you can learn and change in a state of pain and suffering, or you can learn and change in a state of joy and inspiration. And I think right now, the cool thing is that people are waking up. The stronger the emotional reaction you have to some experience in your life, the higher the emotional quotient
the more you pay attention to the cause. And the moment the brain puts all of its attention on the cause, it takes a snapshot. And that's called a memory. So long-term memories are created from very highly emotional experiences. So what happens then is that people think neurologically within the circuitry of that experience, and they feel chemically within the boundaries of those emotions. And so when you have an emotional reaction to someone or something, most people think that they can't control their emotional reaction. Well, it turns out if you allow that emotional reaction, it's called a refractory period, to last for hours or days, that's called a mood. I say to someone, hey, what's up? I'm in a mood. Why in a mood? I had this thing happen to me 5 days ago, and I'm having one long emotional reaction. If you keep that same emotional reaction going on for weeks or months, it's called temperament. Why is he so bitter? I don't know, let's ask him. Why is he so bitter? Why are you bitter? Well, I had this thing happen to me 9 months ago. And if you keep that same emotional reaction going on for years on end, it's called a personality trait. And so learning how to shorten your refractory period of emotional reactions is really where the work starts. So then people, when they have an event, what they do is they keep recalling the event because the emotions of stress hormones, the survival emotions, are saying pay attention to what happened because you want to be prepared if it happens again. Turns out most people spend 70% of their life living in survival and living in stress, so they're always anticipating the worst case scenario based on a past experience, and they're literally, out of the infinite potentials in the quantum field, they're selecting the worst possible outcome, and they're beginning to emotionally embrace it with fear, and they're conditioning their body into a state of fear. Do that enough times, body has a panic attack without you. You can't even predict it because it's programmed subconsciously. So then you say to the person, why are you this way? And they'll say, I am this way because of this event that happened to me 15 or 20 years ago. And what that means from a biological standpoint is that they haven't been able to change since that event. So then the emotions from the experience tend to give the body and the brain a rush of energy. So people become addicted to the rush of those emotions, and they use the problems and conditions in their life to reaffirm their limitation, so at least they can feel something. So now when it comes time to change, you say to the person, why are you this way? Well, every time they recall the event, they're producing the same chemistry in their brain and body as if the event has occurred, firing and wiring the same circuits, and sending the same emotional signature to the body. What's the relevance behind that? Well, your body is the unconscious mind. It doesn't know the difference between the experience that's creating the emotion and the emotion that you're creating by thought alone. So the body's believing is living in the same past experience 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. And so then when those emotions influence certain thoughts, and they do, and then those thoughts create the same emotions, and those same emotions influence the same thoughts, now the entire person's state of being is in the past. So then the hardest part about change is not making the same choices you did the day before, period. And the moment you decide to make a different choice, get ready, because it's going to feel uncomfortable. I think that the bigger thing is that we keep firing and wiring those circuits, they become more hardwired. So you have a thought and then the program runs. But it's the emotion that follows the thought. If you have a fearful thought, you're going to feel anxiety. The moment you feel anxiety, your brain's checking in with your body and saying, yeah, you're pretty anxious. So then you start thinking more corresponding thoughts equal to how you feel. Well, the redundancy of that cycle conditions the body to become the mind. So now, when it comes time to change, the person steps into that river of change and they make a different choice, and all of a sudden, they don't feel the same way. So the body says, well, you've been doing this for 35 years. You're going to just stop suffering and stop feeling guilty and stop feeling shameful, and you're not going to complain or blame or make excuses or feel sorry for yourself. Well, the body's in the unknown. So the body says, I want to return back to familiar territory. So the body starts influencing the mind, and it says, start tomorrow. You're too much like your mother. You'll never change. This isn't going to work for you. This doesn't feel right. And so if you respond to that thought
as if it's true. That same thought will lead to the same choice, which will lead to the same behavior, which will create the same experience, which will produce the same emotion. I want to talk about that notion of, give me a little more detail what you mean by the body becomes the mind and the unconscious mind. What do you mean by that exactly? Well, those are two different things. Your body is your unconscious mind. In a sense, if you're sitting down and you start thinking about some future worst-case scenario that you're conjuring up in your mind, and you begin to feel the emotion of that event, your body doesn't know the difference between the event that's taking place in your world, outer world, and what you're creating by emotion or thought alone. So most people then, they're constantly reaffirming their emotional states. So when it comes time to give up that emotion, they can say, I really want to do it, but really the body is stronger than the mind because it's been conditioned that way. So the servant now has become the master, and the person all of a sudden, once they step into that unknown, they'd rather feel guilt and suffering because at least they can predict it. Being in the unknown is a scary place for most people because the unknown is uncertain. People say to me, well, I can't predict my future. I'm in the unknown, and I always say the best way to predict your future is to create it. Not from the known, but from the unknown. What thoughts do you want to fire and wire in your brain? What behaviors do you want to demonstrate in one day? The act of rehearsing them mentally, closing your eyes, and rehearsing the action. By closing your eyes and mentally rehearsing some action, if you're truly present, the brain does not know the difference between what you're imaging and what you're experiencing in the 3D world. So then you begin to install the neurological hardware in your brain to look like the event has already occurred. Now, your brain is no longer a record of the past. Now it's a map to the future. And if you keep doing it, priming it that way, the hardware becomes a software program. And who knows, you just may start acting like a happy person. And then I think the hardest part 3, 2, 1, is to teach our body emotionally what the future will feel like ahead of the actual experience. So what does that mean? You can't wait for your success to feel empowered. You can't wait for your wealth to feel abundant. You can't wait for your new relationship to feel love or your healing to feel whole. That's the old model of reality of cause and effect, waiting for something outside of us to change how we feel inside of us. And when we feel better inside of us, we pay attention to whatever caused it. But what that means then is that from the Newtonian world, that most people spend their whole life living in lack, waiting for something to change out there. What do you mean the Newtonian world? The Newtonian world is all about the predictable. It's all about predicting the future. But the quantum model of reality is about cause and effect. The moment you start feeling abundant and worthy, you are generating wealth. The moment you're empowered and feel it, you're beginning to step towards your success. The moment you start feeling whole, your healing begins. And when you love yourself and you love all of life, you'll create an equal. And now you're causing an effect. And I think that's the difference between living as a victim in your world saying, I am this way because of this person or that thing or this experience. They made me think and feel this way. And you switch that around, you become a creator of your world. And you start saying, my thinking and my feeling is changing an outcome in my life. And now, that's a whole different game. You start believing more that we're creators of reality. गाइस फटाफट लाइक करो, स्ट्रीम पे लाइक करो, चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करो, ठीक है, जैसे लाइक एंड सब्सक्राइब करो यहाँ पे। ओके, एक बंदा कहाँ है अभी, है कहाँ? हिमांशु को इनवाइट करते हैं। चलो ये बंदे को इनवाइट कर दिया। बाकी जिसको भी आना गाइस यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 30 जिसको भी आना रेड ऑन मी, आई एम लाइव। ओके, हम लोग एक रेड मारेंगे, ठीक है? अभी रेड मारते हैं, चलो एक रेड मारते जल्दी से, ठीक है? हम लोग एक रेड मारते हैं। मैं आपको चैनल का लिंक दूंगा, यहाँ पे चैनल का लिंक दूंगा, उसको अपने को रेड मारना है, ठीक है? तो फटाफट लाइक करो स्ट्रीम पे। यहाँ पे यूट्यूब फैन हर्ष भाई देख लेते हैं, हर्ष भाई आए यहाँ पे क्लैन में। खुल जा भाई, इनका प्रोफाइल क्यों नहीं खुल रहा है? ग्लिच है क्या? कोई प्रोफाइल ग्लिच? लॉल, ये क्या हो रहा है? प्रोफाइल ग्लिच है लगता है, देखना पड़ेगा। प्रोफाइल नहीं खुल रहा।
one of the most ancient cities in the world, Varanasi has 1,200,000 people, and well less than half of these are girls or women. फटाफट लाइक कर दो स्ट्रीम पे, जल्दी से लाइक मार दो। चैनल फर्स्ट टाइम आ रहा है जिससे सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करो। यहाँ पे लेवल 15 क्लैन में रिक्रूटमेंट हो रहा है गाइस, तो लेवल 15 क्लैन का मैं आपको लिंक देता हूँ, ठीक है। लेवल 15 क्लैन का मैं आपको लिंक दूंगा, रिक्रूटमेंट हो रहा है, लेवल 15 क्लैन में ज्वाइन करना है तो लेवल 15 क्लैन में आप ज्वाइन कर सकते हो। कमल भाई हाई 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 सभी लोग गाइस, फटाफट लाइक करो, जल्दी से लाइक कर दो स्ट्रीम पे, ठीक है। लाइक करना मत भूलना, इसमें लाइक नहीं किया जल्दी से एक बार लाइक कर दो। It's colorful. लेवल 10 क्लैन में अभी मैं चैनल लिंक दूंगा गाइस, उस जगह आपको लिखना है डेविल एम्पायर रेड, ठीक है। उस चैनल पे आपको लिखना है डेविल एम्पायर रेड, भाई को सब्सक्राइब कर देना भाई के आज करवा दो तुम लोग, ठीक है। भाई के आज 2.66 सब्सक्राइबर्स है तो 25 सब्सक्राइबर्स और बाकी है तो करवा दो उसको। अरे भाई ऐसे मत करो यार भाई, अरे यार गेमिंग जोन ऐसे मत करो। तो गाइस मैं आपको चैनल का लिंक दे रहा हूँ, इसको सब्सक्राइब करो जाके जल्दी से, भाई को सपोर्ट करो, अपना भाई स्पॉन्सर है, ठीक है। तो इसको जल्दी से करो। एंड मैं किसी को इनवाइट नहीं कर पाऊंगा, सो सॉरी यार, अभी बेस रिव्यू थोड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टीम में देखते हैं, कभी कभी कर पाएंगे हम लोग, करेंगे बेस रिव्यू भी करेंगे। लेकिन गाइस मैं आपको चैनल का लिंक दे रहा हूँ, उस पे जाओ एंड लाइक डेविल एम्पायर रेड सभी जाके रेड मारो उसके चैनल पे। एंड गाइस वो बंदा कर रहा है अपना इस क्लैन का, ये भाई जो है मेरा भाई है, ये अपना ही मेरा फ्रेंड है एंड इसका ये वाला क्लैन है लेवल 15 का। तो इसमें रिक्रूटमेंट हो रहा है, यहाँ पे रेकर क्रू है क्लैन का नाम, एंड इसमें रिक्रूटमेंट हो रहा है इस क्लैन में। तो अगर आपको इस क्लैन में ज्वाइन करना है लेवल 15 क्लैन में, तो आपको कुछ नहीं करना, मैं एक चैनल का लिंक दे रहा हूँ, उसके चैनल पे जाना है आपको एंड वहाँ पे वो रिक्रूटमेंट कर रहा है तो उसमें ज्वाइन कर लीजिए। एंड वहाँ पे आप देखिए कैसे कैसे ज्वाइन करना है आपको। वहाँ पे क्लैन टैग, यहाँ पे क्लैन टैग स्क्रीन पे मिल रहा है, ठीक है। उसको स्ट्रीम पे जाइए एंड उसके यहाँ पे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया एंड ज्वाइन कर लीजिए क्लैन में, ठीक है। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ कंसिस्टेंटली, इसको भी चाहिए वाला लिंक। लेवल 15 क्लैन में ज्वाइन करने के लिए जो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ उस लिंक पे क्लिक कीजिए। एंड अगर आपको लेवल 10 क्लैन में आना है, इस क्लैन में आना है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस एक ही काम करना है, बस यहाँ पे क्लैन में आप आइए एंड क्लैन में चैट एक्सेप्ट कर लिया गया आनंद। At the instant the skull pops. Okay, ends in 1 day. Okay, 2 days में होगा ये। The spiritual journey for you. तो जल्दी से जिसको हेलो वैभव वेलकम स्ट्रीम गाइस। यहाँ पे टैग मत देना, ठीक है। मैं आपको टैग यहाँ पे आपको क्लैन टैग स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो आपको खुद से ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। खुद से ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे क्लैन टैग स्क्रीन पे मिल रहा है, खुद से ज्वाइन कर लीजिए जल्दी। तो मैं बहुत सारे टैग है ना, मैं आपको इनवाइट नहीं कर पाऊंगा, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे खुद से देखो, सब कोई खुद से आ रहा है गाइस, ठीक है। आपको खुद से ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं आपको प्रोफाइल देखूंगा मैं एंड हैज ज्वाइन। अरे यार I know, I'll start again. I think just the whole look of it just was kind of magical. It just had a glow about it. एक मिनट रुक जाओ पे। यश देख के Every morning, Hindu pilgrims gather on the shores of the Ganges to bathe and pray. These waters are believed to wash away sins, to heal the sick, and to allow progression along the wheel of rebirth. अब क्लैन टैग दो क्या? चलो मैं क्लैन का टैग आपको देता हूं, स्पैम करूंगा। अब डिस्क्रिप्शन में कोई मेरा मॉडरेटर भाई अमित भाई काम करो, टैग क्लैन टैग डिस्क्रिप्शन में उसको स्पैम कर दो चैट में क्लैन टैग मेरा क्लैन टैग डिस्क्रिप्शन में है, उस यहाँ से क्लैन टैग वहाँ से लो एंड जस्ट स्पैम करो यार एक बार। क्लैन टैग को स्पैम करो, कोई मॉडरेटर देख रहा है आप तो क्लैन टैग को स्पैम करो, यहाँ पे चैट में स्पैम करो, ठीक है। क्लैन टैग क्या डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ब्रो कितने दिन तक रहेगा क्लैन वॉर लीग्स? क्लैन वॉर लीग्स रहेगा 8 डेज के लिए रहेगा, 8 डेज के लिए। अभी आप क्लैन वॉर लीग्स आपको यहाँ पे स्टार्ट करने का टाइम है 2 दिन तक। आप 2 दिन के अंदर आपको स्टार्ट करना होगा, 2 दिन के अंदर आपके पास टाइम है स्टार्ट करने का, 2 दिन में आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है आपका जो क्लैन वॉर लीग्स है वो चलेगा 8 डेज तक, ठीक है भाई। मैं आ गया भाई, आनंद भाई डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन जो राहुल मैं क्लैन संभालता हूँ आगे, ठीक है। संभालो भाई, क्या करो यार। ये सरदार भाई यश भाई किसी को भी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है भाई। टाउन हॉल 6 वाले बंदे को एक्सेप्ट कर रहा है, बाकी लोग कैसे ज्वाइन करेंगे क्लैन में? That batter contains rice flour and lentil flour. What's the new update? The clan war leaks. You wanna see that? See this. This is a new update. Clan war leaks is the biggest update of Clash of Clans. यहाँ से आप लोग ज्वाइन होगा, यहाँ पे सब कोई मेंबर्स को यहाँ पे स्टार्ट होगा वॉर। जब स्टार्ट होगी ना वॉर तो उसके बाद आपको एक डिस्प्ले आएगा, प्रिपरेशन आएगा, डिस्प्ले वहाँ पे आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। बस फटाफट लाइक करो, लाइक करो एंड क्लैन टैग में दिखा दो। क्लैन टैग में स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, ठीक है। जिसको भी आना क्लैन टैग स्क्रीन पे है भाई। मेरा ट्रॉफी 1800 है, चलो मैं थोड़ा ट्रॉफी कम करता हूँ, चलो कोई बात नहीं। मैं काम करता हूँ, मैं ट्रॉफी थोड़ा कम करता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे थोड़ा यहाँ 1000 कर देते हैं, ठीक है। इतना कर देते तो सबके मतलब सबके ट्रॉफी में आ जाएगा, ठीक है। मैंने इतना कम कर दिया है। अब जिसको भी आना है आप लोग आ जाओ, मैंने ट्रॉफी सही कर दिया, अब आप आ सकते हो। आई सपोर्ट भाई, वेलकम स्ट्रीम गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब करो, जिसको लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं है सारा ट्रॉफी कम करो, कर दिया भाई, कर दिया। 1500 कर दिया है भाई, 1500 कर दिया, ठीक है 1500 कर दिया, टेंशन मत लो।
मेरे को प्लीज मेरे को लेना प्लीज, हमें ले लेंगे। फटाफट लाइक करो गाइस, जिसको भी रिक्रूटमेंट हो रहा है यहाँ पे, लाइव रिक्रूटमेंट हो रहा है, जिसको भी लाइव रिक्रूटमेंट हो रहा है यहाँ पे बंदों को देख देख के लिया जाएगा। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, भाई बहुत अच्छा प्लेयर है, भाई को ले लिया जाता है। गाइस यार यहाँ पे क्लैन किट आपका स्क्रीन पे है, ठीक है। मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूँ एक बार, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। हेलो हेलो भाई सभी को ऑफिशियल भाई वेलकम। कितने की वॉर लगाएगी? 50 की रहेगी, 50 की वॉर लगेगी मेरे क्लैन में। 1000 करा, 1000, अरे भाई 1000, चलो 1000, चलो तुम लोग बोलो इतना तो मैं कर ही देता हूँ 1000। लो भाई लो 1000, अरे यार क्या कर रहा है ये, रुक जा, 1000 करने दे मेरे को, 500 यहाँ पे करता है, ठीक है। तो an exploration of a history and culture as rich as अब कोई बहाना नहीं चलेगा, 1000 मैंने कर दिया। कितना ट्रॉफी कम, इससे ट्रॉफी कम हो भाई, कितना ट्रॉफी कम रखोगे भाई? रशर्स को मत लेना, मैं वही बोलूंगा, रशर्स को प्लीज मत लेना। Very nicely. अक्ष देख रहा है क्या स्ट्रीम को? Really understand India. Don't one should visit. Take rush IDs. Visiting the school, I actually found myself as I was standing in one of the classrooms. Now my emotions coming in tears because they were so proud of their okay. Hi, welcome stream. Hello everyone guys, the like children came on a holiday like karo guys, like and subscribe kar do, like and subscribe, to sing for us and they were elated to be there as were we. 400 watching नहीं यार, अपने 700 की watching गई थी यार, 700 की watching गई थी bro, Congo for 700 watching। अरे थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू यार। लेकिन अभी गेम स्टार्ट हो गया ना, तो अभी सब watching कम हो गई। मेरा देखो, अरे भाई बेस नहीं देख रहा भाई, सॉरी यार मैं बेस नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, सो सॉरी गाइस। जो क्लैन अटैक आपके स्क्रीन पे, जिसको भी आना आप लोग आ सकते हो, ठीक है। एंड कोई भी यार मतलब कि आप गाइस जिसको भी आना ना, अपने अच्छे आईडी से आना, ठीक है, अपने अच्छे आईडी से आना, मतलब कि कोई भी खराब आईडी से मत आना, अपने सबसे बेस्ट आईडी से आना, जो आपका बेस्ट आईडी है ना उससे आना, ठीक है, क्योंकि यार बेस्ट चाहिए अपने को यार, बेस्ट प्लेयर्स चाहिए, बेस्ट प्लेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से प्लेयर्स का मतलब कि हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, एंड अच्छे से प्लेयर्स को मतलब कि हम लोग वो करेंगे वहाँ पे रिक्रूटमेंट। तो गाइस यहाँ पे 39 मेंबर्स हो चुके हैं यहाँ पे क्लैन। गाइस मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, अगर लेवल 15 क्लैन में आपको ज्वाइन करना है तो लेवल 15 क्लैन का मैं लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पे आप ज्वाइन करो। लेवल 15 क्लैन का मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ यहाँ पे। चलो जिसको भी आना है आप लोग लेवल 15 क्लैन में ज्वाइन कर सकते हो। इस स्ट्रीम पे जाओ, इस स्ट्रीम पे जाओ, एक रेड मारना है, ठीक है। चलो एक रेड मार ही लेते हैं, ठीक है, चलो एक रेड मारते हैं हम लोग। भाई वंस भाई एक काम करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में क्लैन का टैग है, उसको स्पैम मारो कमेंट में, ठीक है। उसको मतलब धीरे धीरे करके डालते रहो, तुम धीरे धीरे करके डालते रहो, कमेंट सेक्शन में तुम डालते रहो, उसको डालते रहो, ठीक है। अभी हम चलते जाते देखते यार यहाँ पे एक बार इन्फिनिटी गेमर पे जैसा रेड मारते तगड़ा वाला, ठीक है, तगड़ा वाला रेड मारते हैं। भाई मेरे पास क्लैन है तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ क्लैन में, सो सॉरी। इन्फिनिटी गेमर पे चलते हैं, इन्फिनिटी गेमर पे। भाई रिजेक्ट मार दिया, अरे लॉल, रुक जाओ देखता हूँ क्या नाम से भाई, आनंद, ये हैरी भाई क्या नाम से, कॉपी कर लिया मैंने इसको। वैसे एक रेड मारेंगे, ठीक है, रेड मारेंगे, मैं आपको लिंक देता हूँ, ठीक है। एक बंदे पे रेड मारेंगे, उसको मतलब इसको वॉचिंग 100 पहुंचा देनी आज, ठीक है। उसकी 100 वॉचिंग आई थिंक कभी नहीं गई है, तो ट्राई करते हो उसकी 100 वॉचिंग ले जाने का, ठीक है। तो ट्राई करो 100 वॉचिंग से चली जाए। मैं भी तुमको लिंक दूंगा, ठीक है, जिसको भी लिंक दे रहा हूँ मैं। एंड सबको जाकर स्ट्रीम पे लिखो डेविल एम्पायर रेड, डेविल एम्पायर रेड, ठीक है। सबको जाकर उसको स्ट्रीम पे लिखना डेविल एम्पायर रेड, उसकी ट्राई करो उसकी 100 लाइक्स हो जाए आज स्ट्रीम पे, उसके 2.6 के सब्सक्राइबर्स हो जाए। भाई को थोड़ा सपोर्ट करो, 25-30 सब्सक्राइबर्स को सपोर्ट करो, उसको जाके सब्सक्राइब करो, उसको जाके मैं लिंक दे रहा हूँ आपको कंसिस्टेंटली। उसके स्ट्रीम पे जाओ, लिखना आपको डेविल एम्पायर रेड, सबको जाके लिखो, ठीक है, ठीक है, लिखो उसको डेविल एम्पायर रेड, जाकर स्ट्रीम पे लिखो। हैरी भाई मैं देखता हूँ आपका, ठीक है। सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, मास्टरपीस आप भी सब्सक्राइब करो यार। एंड किसी सपोर्ट चाहिए चैनल के लिए तुम बताना, हैरी पॉटर नेम से, ओके, ठीक है। मैं देखता हूँ हैरी भाई, गाइस मैं लिंक दे रहा हूँ आपको, जिसको भी चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब। हेलो भाई आतिक भाई, हेलो अमेजिंग भाई, भाई क्लैन बोर्ड शुरू करो, क्लैन बोर्ड शुरू करेंगे, अभी नहीं करेंगे, 10-15 मिनट में करेंगे, मतलब कि हम लोग 4 o'clock पर स्टार्ट करेंगे। अभी 3:42 हो रहा है। एक बार मेंबर से एक बार अच्छे से आ जाए तभी ना, खराब मेंबर्स का तो जो नहीं ना कर पाएंगे हम लोग क्लैन बॉलिंग्स। गाइस मैं आपको लिंक दे रहा हूं, उस पे जाओ एंड लिखो डेविल एम्पायर रेड, डेविल एम्पायर रेड, डेविल एम्पायर रेड, सब कुछ जाओ, सब कुछ जाओ गाइस, सब कुछ जाओ, जाके लिखो उसके चैनल पे डेविल एम्पायर रेड लिखना है, फिर डेविल आर्मी रेड, डेविल फैमिली रेड, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। एंड उसको सपोर्ट करो, भाई को सपोर्ट करो वहाँ पे, ठीक है, सपोर्ट करो जल्दी से। मैं लिंक दे रहा हूँ आपको, बार बार सपोर्ट करो भाई को, सपोर्ट करो, ठीक है, सपोर्ट करो। क्या बोला जा, सुनते हैं इसका क्या बोल क्या रही है। गाइस मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, मैं पे दे रहा हूँ गाइस आपको लिंक, यार जाके सपोर्ट करो उसको, ठीक है। देखते
So today we're gonna do a little tourism in Pakistan. लेवल 15 क्लैन में रिक्रूटमेंट हो रहा है भाई यहाँ पे। इस क्लैन में लेवल 15 का रिक्रूटमेंट हो रहा है। इस क्लैन में ये जो मेरा ही क्लैन है, ये जो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ ना, ये मेरा ही क्लैन है। एंड सीओसी में जाओ, हम सीओसी में जा रहे हैं तो ये मेरा ही क्लैन है गाइस, जो मैं आपको यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ जिस क्लैन का। यहाँ पे जो मैं आपको लाइव स्ट्रीम में लिंक दे रहा हूँ, ये मेरा ही क्लैन है, ये मेरा भाई है, ठीक है। मेरे भाई को जाकर सपोर्ट करो, मेरे भाई को भी थोड़ा सपोर्ट करो। जो भाई इन्फिनिटी गेमर मेरा भाई है तो उसको सपोर्ट करो थोड़ा सा, ठीक है। क्लैन वॉर लिंक्स नॉट ओपनिंग भाई, अपडेट अगर आपने नहीं किया तो अपडेट कर लो एक बार, ठीक है। तो गाइस मैं आपको लिंक दे रहा हूँ मेरे भाई के चैनल पे, यार तो सपोर्ट करो थोड़ा, भाई को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है। तो गाइस जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो स्ट्रीम पे, ठीक है। सीओसी खोल लेते हैं, सीओसी खोल लेते हैं। एंड क्लैन अटैक दो भाई, यहाँ पे वंश नहीं है यार, वंश है क्या भाई, वंश हो क्या पता नहीं, वंश है या नहीं। मेंटेस खत्म हो गया, हाँ मेंटेस खत्म हो गया यहाँ पे। एंड क्लैन वॉर लिंक्स का अपडेट भी आ गया है बस। ओके यहाँ पे गेम भाई मेरा नहीं जा रहा, आपका नहीं जा रहा मतलब क्या नहीं जा रहा भाई, जो मैं देखता हूँ। देखो गाइस क्लैन वॉर लिंक्स का अपडेट आ गया यहाँ पे आप देख सकते हो, अपने स्क्रीन पे दिख रहा है ना, बहुत ही खतरनाक दिख रहा है यार लिटरली। हैरी पॉटर, जिसको मैं हैरी पॉटर को चेक कर लिया। हैरी पॉटर कहाँ भाई, हैरी पॉटर एक मिनट देख रहा हूँ। हैरी भाई क्लैश ऑन टाइटन सब खेलते हैं। हाय वेलकम टीम गाइस, वेलकम टीम। मैं म्यूजिक लगाता हूँ, 2 मिनट रुकना, म्यूजिक लगाता हूँ, दूसरे म्यूजिक नहीं दिख रहा यार। हैरी भाई काम करो, लेवल 15 क्लैन में ज्वाइन करो, 15 क्लैन में लेवल 15 वाले क्लैन में ज्वाइन करो। हैरी भाई लेवल 15 वाले में ज्वाइन करो, ठीक है। गाइस यहाँ पे टैग दिया जा रहा है आपको, स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे टैग दिया जा रहा है, ठीक है। क्लैन ये क्लैन है, अपने क्लैन टैग यही है, ज्वाइन करना ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, ज्वाइन कर लो। एंड जो फर्स्ट टाइम गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, लाइक एंड सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो भाई आराम से वंश आराम से एक सेकंड। Goat feet? Yeah, goat. This is probably goat feet. Do you like goat feet? Take. Yeah. Very good. You like it? Nice. Very like it. You do? Yeah. Are you sure? Alright, you should eat. So this is the goat's foot. Yeah? Okay, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सब सही लग रहा है मेरे को। 15 आवर्स। बकरी के पाए। यहाँ पे देखते हैं जो वॉर टाइमर है, क्या उसको लिया जा सकता है? बकरी के पाए। वॉर टाइमर लिया जा सकता है यहाँ पे। This is bakri ke pae, and you have to eat it when it's hot. And you eat the skin and tendons and feet, and eat it with some naan. सुनो, as you can see the foot there. War I don't think I'm doing it very well. I'm not professional. Like our brother here, professional at eating goat's meat. There you go. Dip it in the sauce. Because they are also eligible. लिख दो, मैं लिख देता हूँ. Also eligible. It's nice because it has some spiciness in it. CWL. But it's a little bit gooey. Next, we're gonna go see a big tower. ओके मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे, ठीक है। अच्छे प्लेयर्स ही आना गाइस, सिर्फ अच्छे प्लेयर्स आना, जो भी अच्छे मतलब खेलते हो आते हो, अच्छे प्लेयर जितने भी आ जाओ, टैग आपको दे रहा हूँ मैं। हाय भाई, हेलो भाई, मैं भाई क्लैन वॉर लीग शुरू नहीं किया भाई, करेंगे अभी करेंगे एक बार। मेंबर्स सारे आप लोग अच्छे मेंबर, जिसको भी आना है आ जाओ एक बार, ठीक है। जिसको भी आना है क्लैन में आ सकते हो आप लोग, आ जाओ, ठीक है। जितने भी अच्छे मेंबर्स आ जाओ, एक बार मैं देखता हूँ आप किक कर सकते हो तो किक कर देंगे। एंड जट भाई, एंड जट जा भाई, कितना बार आएगा तू? क्लैश ऑन टाइटन बोलते हैं, क्लैश ऑन टाइटन। अच्छा डाउनलोड 8 चाहिए, डाउनलोड 8 फ्यूजन की आईडी लिखते हैं, डाउनलोड 7 स्टार लॉर्ड चेक आउट करते हैं। स्टार लॉर्ड भी अच्छा मैक्स आउट है गाइस, टाउन 7 मिनिमम आना। टाउन 7 अगर आपका मैक्स आउट है तो आप आ सकते हो टाउन 7, यू आर वेलकम, ठीक है। क्लैन अटैक डिस्क्रिप्शन में, क्लैन अटैक डिस्क्रिप्शन 50 वर्सेस 15 तो कर दो भाई। ऑस्ट्रेलिया नहीं, पहले एक बार 50 मेंबर्स आ जाएंगे ना, उसके बाद 15 वर्सेस 15 में वो अपने अकाउंट ले लेगा। हाउ टू प्ले क्लैन वॉर लीग्स भाई, यहाँ पे क्लैन वॉर लीग्स के लिए कुछ नहीं, आपको बस यहाँ पे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा 2 क्लैन में हो रहा है, ठीक है। मैं इसके बाद उस क्लैन में रिक्रूटमेंट करूँगा, एक बार इस क्लैन में हो जाए ना तो उस क्लैन में, अगर आपको उस क्लैन में ज्वाइन करना है, मतलब मेरे लेवल 15 क्लैन में अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ एक चैनल का, ठीक है। उसके भाई के चैनल पे जाइए, एंड अभी वो मेरा भाई है, ठीक है। ये जो मेरा भाई है, मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ अपने चैनल पे, भाई मेरा अपने दूसरे चैनल पे रिक्रूटमेंट कर रहा है, उसके भी चैनल है, उस पर जाइए
है। एंड उसके यहाँ पे देखिए एंड वो अभी रिक्रूटमेंट कर रहा है। तो उसके अगर आपको लेवल 15 क्लैन में ज्वाइन करना तो लेवल 15 क्लैन में वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लेवल 10 क्लैन में ज्वाइन करना तो लेवल 10 क्लैन में मेरे से लाइव स्ट्रीम से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। म्यूजिक लाते हैं, म्यूजिक नहीं बज रहा, पता नहीं क्या हो गया। ओके म्यूजिक बंद हो गया। Just made a few friends. Making new friends every day here, easily. ओके गाइस, हाँ हैरी एक्सेप्ट मी आई एम हल्क। भाई देखा जा रहा है, सभी को सबको देखा जा रहा है, ठीक है। अगर आपको बेस अच्छा होना तो जरूर एक्सेप्ट कर लीजिए, नो इशू अबाउट दैट। अगर बेस अच्छा होना तो तुरंत ले लीजिएगा। हल्क भाई कहाँ है? हल्क मुझे दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा भाई हल्क भाई। अच्छा ये रहा हल्क, देखता हूँ मैं आपका प्रोफाइल। हल्क को ले लेते हैं, ले लिया भाई हल्क भाई, आपको ले लिया, ठीक है आपको ले लिया। बताने के लिए कि आपको नहीं लिया गया था, मेरा चालू नहीं हुआ। अरे भाई तो यार गेम को अपडेट करो, अगर अपडेट नहीं किया तो, या क्लियर कैचे क्लियर डाटा करो, क्लियर कैचे क्लियर डाटा। हैरी भाई टैग देगा जरा सा, हैरी टैग देगा तो एक बार मैं देख लूंगा। अगर मैक्स आउट आईडी है तो, अगर मैक्स आउट आईडी है तो मेरे को टैग देते, मैं आपको इनवाइट कर देता हूँ। लाओ भाई हैरी भाई तुम दे दो अपना टैग बस, क्योंकि यार तुम बाकी लोग तो इनवाइट कर दिया जा रहा है। एल्डर तो हैरी को इनवाइट, ओके ठीक है आनंद भाई, आनंद भाई तुम इनवाइट कर दो हैरी को। कहाँ आनंद भाई? लो भाई तुम हैरी भाई इनवाइट, हैरी को इनवाइट। Yeah, this looks way cooler. I mean, Schwedigan was okay, श्योर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पे श्योर को। गाइस जल्दी से लाइक करो, जल्दी से लाइक करो, स्ट्रीम पे लाइक करो गाइस, लाइक करो। अगर कोई क्लैन में किसी को अगर रिजेक्ट कर देगा सो सॉरी। आप दूसरे क्लैन में ज्वाइन कर सकते हो, दूसरा क्लैन भी है अपना, दूसरे क्लैन में ज्वाइन कर सकते हो आप, दूसरे क्लैन में ज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। दूसरे क्लैन में आपको ले लिया जाएगा यहाँ पे। गाइस 640 लाइक कर दो, लाइक कर दो गाइस। पता नहीं 700 लाइक्स हो पाएगा नहीं, आप लोग करवा सकते हो तो 700 लाइक्स कर दो। अगर गाइस चैनल फर्स्ट टाइम आ रहे हो सब्सक्राइब कर दो। भाई क्या इवेंट आया है, क्लैन वॉर लीग्स आ गए, यहाँ पे क्लैन वॉर लीग्स आ गया है। यहाँ पे 2 इवेंट है, यहाँ पे वांटेड एंड अनवांटेड एंड बैरल ऑफ बोन्स क्लैन वॉर लीग्स आ चुका है यहाँ पे। एंड 4 के यहाँ पे स्टार बोनस आने वाला है 1-2 दिन में क्लैन गेम में। तो ये रहा आपका क्लैन वॉर लीग्स, ये देखो ये रहा क्लैन वॉर लीग्स। यहाँ मेंबर को बना के आपको स्टार्ट होगा, फिर एक बार लेआउट जो है क्लैन वॉर लीग्स का बहुत मस्त लगेगा आपको, ठीक है। What's the first? पार्ट किस तरीके से कर रहा है Medina? Saudi Arabia. Yeah, that makes sense. ये हैरी भाई का देखिएगा। अरे यार क्या हो रहा है? हैरी कहाँ गया? Okay. Well, this whole structure here is like 300 or 400 years old. Hi, hello. Please tell me base invite. भाई invite तो नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे मैं, आपको कुछ ज्वाइन करना पड़ता है, ठीक है। इवन मैं देख लेता हूँ कैसे सब बेसिस है किसी से। Okay. So we got a tour guide even though we don't want one. Okay, मैं देखता हूँ इसका किसको तो किक आउट कर दिया, किसको तो किक आउट कर सकते हैं लोग। एक बार देख लेता हूँ मैं स्टार्टिंग से, ठीक है। एक बार मैं स्टार्टिंग देखता हूँ किसको किक आउट कर सकते हैं। आप देखते हैं, I gotta go though. ठीक है आपने क्या कैसे देखा? Yeah, okay, it's good to meet you guys. Yeah, यहाँ पे गाइस आपको टैग डिस्क्रिप्शन में क्लाइंट वंस पे यहाँ पे टैग दो यार, टैग दो लोग ज्वाइन कर पाए, ठीक है। मैं कैसे देख रहा हूँ जैनुअल। अरे भाई क्या रशर को ले रहा है, क्या गाइस मैं देख रहा हूँ, ठीक है। जो बेकार आदमी है ना, आपको क्लाइंट टैग डिस्क्रिप्शन में देखो, डिस्क्रिप्शन में भाई। We're on a tour of Lahore Fort. We got a professional tour guide that's telling us the history behind this place. डालो and there's birds here. Mod. यहाँ पे यार क्लैन टैग अपनी स्क्रीन पे गाइस। आनंद भाई यार, आनंद भाई डालना यार प्लीज, आनंद भाई डालना क्लैन टैग डालना, मेरे को दिक्कत हो रही है यहाँ पे प्लीज। सब देख लेना, मेरे को दिक्कत हो रही है यहाँ पे, सबके कमेंट्स ही पढ़ने पड़ रहे हैं। आ गया हैरी, हाँ पता है हैरी, थैंक्स फॉर लॉल। भाई कब चलेगा क्लैन वॉलिंग्स? अभी जस्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग, जस्ट स्टार्ट करेंगे। फ्यूजन की आईडी अपनी आईडी है, चलो बढ़िया। स्टार लॉर्ड को एक बार देख लेते हैं। स्टार लॉर्ड बढ़िया मैक्स आउट है। बीस्ट को देख लेते हैं, बीस्ट को मैक्स आउट है या नहीं। बीस्ट को मैक्स आउट नाइस। किंग वॉर का देख लेते हैं, किंग वॉर भी मैक्स आउट है नाइस। रोमन अंपायर कुछ कर सकते हैं, रोमन अंपायर में भाई का ये तो अपने ही क्लैन कर सकते हैं। Your mom really wants tea. Oh, it wasn't built by one king, it was built by multiple people, but it's just kind of funny to see, because like, if you don't think about maybe the history, it just looks like an amusement park with a whole bunch of cool buildings. Yeah.
हाय वेलकम सी हेलो हेलो साला थैंक्स। और मेरा ऑप्शन नहीं आ रहा है क्लैन वॉर लीग्स का, ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर आपका वॉर चल रहा है तो ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपका वॉर चल रहा है क्लैन में, ठीक है, तब आपको ऑप्शन नहीं आएगा। अगर वॉर चल रहा है आपका तो people are super nice. ठीक है, अगर वॉर चल रहा है तो शायद नहीं, आपका नहीं आएगा। ठीक है, अगर वॉर नहीं चल रहा तो people we met are super cool. ठीक है, बहुत लोग नहीं आ रहा तो क्लियर कैच क्लियर डाटा कीजिए, गेम को अपडेट अगर नहीं किया आपने गेम को अपडेट कर लीजिए एक बार, ठीक है। Yeah, I mean it's little foreigners, not a lot of foreigners here, so I guess you kind of stick out. But I felt safe the whole time. Guys, spam करो, हाँ, yes भाई spam। But we always had our friends with us as well. So. अनुराग भाई क्या यार, बहुत ही, अरे भाई इतना कम हीरोज का नहीं नहीं भाई सॉरी यार, इतना कम हीरो लेवल 5 का हीरोज को रखता है भाई, पागल वागल हो गया क्या। लेवल 5 का हीरोज था भाई, मेरा शौक है कि मेरा हार्ट अटैक आ जाता है अभी लिटरली। लेवल 5 के हीरोज में देख के माथा दर्द देना मेरा भाई। कौन रखता है लेवल 5 के हीरोज भाई? भाई टाउन 7 वाले रखते हैं यार लेवल 5 के हीरो। ऑल हाल का चुका मोहित को देख लेते हैं, मोहित इसको देख लेते हैं। चलो मोहित सही है, चलो कितना चलता है हीरोज। हीरोज के लेवल 15 से प्लस होना चाहिए तभी चलेगा। प्रंजीत हाई भाई हेलो हेलो हेलो। ओके प्रंजीत को ले लेगा, प्रंजीत बहुत तगड़ा प्लेयर है, प्रंजीत भाई तगड़ा प्लेयर, लिटरली तगड़ा है भाई, प्रंजीत तगड़ा प्लेयर है। किक एनी Hello friends, default welcome to the channel English Professionally. So you can put a like if you like this video, and really do you want to know the difference between do, does, am, is, हाय वेलकम सी हेलो 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 गाइस, फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर लो, लाइक सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, ठीक है। 2 मेंबर्स की और जगह दिखा रही है यहाँ पे, 2 मेंबर्स को ज्वाइन कर लो ना, साथ तो ज्वाइन कर लो। यहाँ पे देखता हूँ मैं, okay, को देखते हैं। you can see all the information here. Okay, let's look at do. प्रंजीत तो अच्छा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जोड़ करते एक बार। We use it in present simple. ज़्यादा कुछ मतलब कि आपको वो नहीं करना है, बस आपका बस डिसेंट होना चाहिए, आपका जो प्रोफाइल डिसेंट होना चाहिए, और कुछ ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं है, बस प्रोफाइल डिसेंट होना चाहिए आपका। एंड बेस तो हम लोग यहाँ पे देख ही रहे, बाकी लोग बेस देख रहे हैं, प्रोफाइल देख रहा हूँ। चलो बढ़िया बढ़िया, बाकी प्लेयर्स बढ़िया है। इस बार लूसीफर का देखते हैं, लूसीफर यहाँ पे आया चुप के कैसा बेस इसका। Do you want हीरोज to के put a लेवल like? अच्छा है, इतना काफी है फॉर टाउन 9 का बेस के लिए, इतना काफी है। Does भाई का we also use को रिजेक्ट कर दिया गया लगता है in present simple for रिजेक्ट करना बनता है, questions, पैक अभी अनलॉक नहीं है। but in contrast to do, नहीं अभिषेक को ले लो, we use अभिषेक it को ले लो, अभिषेक सही with प्लेयर है। he, she and it. हेलो रोस्टी, हेलो अभय भाई वेलकम टीम। अरे Does she like it? एमसी बताना क्या भाई, Or क्या you बताइए can अभय भाई, क्या ask, पूछ रहे हो? does he like फैसल भाई it? हेलो, रजनी हेलो, अभय भाई Or बोलो। does it भाई इन्फर्नो often नहीं happen? लगाया हूँ। अरे Okay? भाई अच्छा ठीक है, So इन्फर्नो नहीं do लगाया तब and सही भाई यार, does थोड़ा with वॉर do वेट and कम does मिलेगा। with इन्फर्नो present तुमने नहीं लगाया, simple. थोड़ा वॉर वेट कम If मिलेगा। you have कीप मैविन I वॉकिंग में मैं ले लिया हूँ, जिसको इसको लेना था ना मैंने ले लिया है। do. यहाँ पे एक If और you मैं देख रहा हूँ, have हाईवे वेलकम सीम he, भाई लगा हो रहा she, क्लैन में, it, वो क्लैन लीग you नहीं need खेल सकता। does. हाँ जो वॉर में है वो अभी Okay. क्लैन लीग नहीं खेल पाएगा। Let's look at am. We need it Guys, in एक बंदे की जगह आई present थिंक दिख रही simple है, too, मैं लिख दो and we use it Akshay. with I. But देख we don't लो need लास्ट actually टाइम to say only I am. नहीं है। We can also use लिख it दो एक बार in ताकि ये लोग कोई negative form, बैड प्लेयर किक कर दे, negative form फिर वो and चले लेवल in 15 क्लैन के questions. रिक्रूटमेंट पे, ठीक है। Look, तो नहीं I am right. So it isn't a negative form and it isn't a question. It's a statement. हाय हेलो I प्लीज am वॉर not स्टार्ट करो, right. करेंगे इसमें स्टार्ट करेंगे See, गाइस, ठीक है। it's a अभी बहुत लोग negative ज्वाइन form. नहीं कर पाए, मैं जानता हूँ बहुत लोग ज्वाइन नहीं कर And पाए, टेंशन मत लो, are मैं you अभी करवाऊंगा happy? आपको दूसरे क्लैन में ज्वाइन करवाता Are हूँ, you ठीक है। happy? मैं देखता हूँ कि भाई मुझे So